हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन। सो वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शा क्लासेस। आज हम करने वाले हैं हम अपने BANS 183 का असाइनमेंट के सोल्यूशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है FYUP का, जो बच्चे 2025 पे अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये उन सभी बच्चों के लिए है और उन्हें ये बना के डालना है। और जिन बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन उन्होंने सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करे, मतलब उन्होंने असाइनमेंट सबमिशन नहीं कर रखा, तो उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अपने एग्ज़ाम्स दे रखे लेकिन उन्होंने सबमिशन नहीं करा असाइनमेंट का, तो वो भी अभी सबमिशन करवा के अपने नंबर लगवा सकते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। ये जो है ये एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि जनवरी 2025 सेशंस का है BNST, जिसका नाम है टूरिज़्म एंथ्रोपोलॉजी। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपना फ्रंट पेज फिल करना होता है। फ्रंट पेज फिल करने के बाद आपको सेकंड नंबर पे अपनी ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी होती है। देन नंबर 3 पे आपको क्वेश्चन प्रिंट करवाना होता है, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, यहाँ से ये वाली इसकी प्रिंट आउट करवानी होती है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद निकलवाने के बाद आपको जो सोल्यूशन आप लिखोगे, जो सोल्यूशंस मैं आपको दूंगी, वो रिटन फॉर्मेट में, प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं, वरना रिजेक्ट हो जाएगा असाइनमेंट। रिटन लिखा हुआ आपको उसे अटैच करना है इन सब चीज़ों को आपस में। उसके बाद आपको जाके अपने स्टडी सेंटर या फिर आपको जैसे ऑनलाइन पोर्टल पे अगर सबमिशन है तो वो कराना है, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट 1 में आपको 500 वर्ड्स में ईच देना है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है A और B। देन सेकेंड असाइनमेंट इसी वाले असाइनमेंट में आपको 250 में शॉर्ट नोट्स में लिख के देना है 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन ABC। देन 150 वर्ड में इन सबको डिफाइन करना है, टूरिस्ट, गेस्ट, लोकल एनवायरनमेंट, वायरसेस, टूरिज्म, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर है। सबसे पहले आप कोर्स कोड डालेंगे BANS 183, उसके बाद कोर्स टाइटल डालेंगे टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। फिर असाइनमेंट 1 लिखेंगे, फिर आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच लिखेंगे। फिर डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ स्टडी ऑफ टूरिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। फिर इसका आंसर लिखेंगे The history of study of tourism in anthropology. Tourism is a social and cultural phenomena has been studied within anthropology since the mid 20th century. While tourism studies have since evolved into a multidisciplinary field, anthropology plays a central role in understanding its cultural, social and symbolic dimensions. The study of tourism and within anthropology has its root in several theoretical frameworks and intellectual traditions. Early anthropological interest in tourism. The anthropological study of tourism began in the 1950s and 1960s when scholars recognized the relevance of tourism in understanding cultural exchanges, identity formation and social dynamics. Initially, tourism was viewed as a form of modern leisure and mobility tied to industrialization, urbanization and economic prosperity in Western societies. One of the earliest contributions was made by Valen Smith was 1977 book Host and Guest. The anthropology of tourism is considered as functional text in the field. Smith and other contributors analyzed the impact of tourism on host societies, focusing on cultural commodification, economic effect, and changes in social structures, structuralism, and symbolism. In the 1960s and 1970s, anthropologists like Dean McCannell applied structuralist approaches to tourism. McCannell's seminal work, The Tourist, A New Theory of Leisure Class 1976, highlighted tourism as a quest for authenticity in a modern industrialized world. He argued that tourists often seek an authentic experience but encounter stagnant representations of culture instead. Victor Turner, a symbolic anthropologist, also contributed to the study of tourism. Turner's analyzed pilgrimage and tourism as liminal experiences while individuals step outside their everyday role and enter a transitional phase. He compared tourism to rituals, emphasizing the symbolic significance of tourism sites and activities. Tourism and globalization. In the late 20th century, anthropologists expanded their focus to examine the relationship between tourism and globalization. Scholars like John Urry introduced the concept of outer gaze, emphasizing how tourism reflects and reinforces power dynamics between
tourist and host communities. The study of tourism during the period became more critical, addressing issues of cultural imperialism, neocolonialism, and the unequal distribution of economic benefits. Cultural accommodation and authenticity. Anthropologists have critically examined the commodification of culture in tourism. Hosts often adapt or transform their cultural practices, rituals, and traditions to cater to tourist expectations. Sorry, this process can lead to the loss of authenticity, as seen in stagnant authenticity, where local cultures perform simplified versions of their tradition for tourist consumption. These debates have prompted scholars to question what constitutes authenticity and how it is constructed and negotiated in tourism context. Recent trends in anthropological tourism studies. Since the 2000s, anthropological research on tourism has embraced new themes including sustainable tourism, the role of technology, and the ethical implication of tourism. Topics like ecotourism, heritage tourism, and dark tourism, visiting sites associated with death or tragedy, have gained scholarly attention. Anthropologists now explore how tourism intersects with issues of identity, heritage preservation, and environmental conservation. Conclusion. The history of study of tourism is in anthropology reflect to disciplines evolving focus on understanding human behavior, cultural exchange, and social change. From early analysis of host guest relationships to sorry, contemporary critiques of globalization and commodification, anthropology continues to provide valuable insight into the complexities of tourism. By studying tourism, anthropologists illuminate broader social processes including globalization, identity formation, and the negotiation of cultural meanings. अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे. ये भी आपको 500 वर्ड्स में देने हैं. मैंने आपको पॉइंट्स में करके दे रखे हैं जिससे आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, और आप थोड़ा सा गैप दे दे के लिखोगे ना और बड़ा बड़ा लिखोगे तो और अच्छे नंबर आएंगे आपके. डिफाइन टेंगिबल एंड इनटेंगिबल हेरिटेज एंड सुटेबल एग्जाम्पल्स. टेंगिबल एंड intangible heritage. Heritage refers to the legacy of physical artifacts and intangible attributes of a society that are inherited from past generations, maintained in the present, and passed on to future generations. It is broadly categorized into tangible and intangible heritage. Tangible heritage includes physical objects, buildings, and locations, the whole cultural, historical, or artistic significance. These are concrete material elements that are visible, can be touched. Characteristics, physical and material in nature, can be preserved and restored. Represent architectural, artistic, or archaeological importance. Types of tangible heritage. Movable heritage includes an artifacts, paintings, sculptures, manuscripts, and tools found in museums. Immovable heritage refers to monument, building, and archaeological sites. मूवेबल हेरिटेज वो होते हैं जिन्हें हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पेंटिंग जो है वो बहुत पुरानी होती है. स्कल्पचर्स, मैन्युस्क्रिप्ट जो पुराने टाइम पे होते थे, और इन सारी टूल्सों को हम म्यूज़ियम में रख के अभी मूवेबल कर सकते हैं. लेकिन इमूवेबल जैसे कि बड़े बड़े माउंटेन्स, हिमालय पर्वत, उसे तो मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो इमूवेबल है. बिल्डिंग्स है, कुतुब मीनार हो गई, और आर्कोलॉजिकल साइट्स है बहुत सारी. ठीक है. नेचुरल है जैसे कि जमाली कमाली दिल्ली में है ना, लाडो शाही के पास, वो देखो आर्कोलॉजिकल साइट है, उसका तो नाम ही पड़ गया द ओल्ड आर्कोलॉजिकल पार्क ऑफ मेहरौली, है ना, ऐसे समथिंग कुछ नाम है. नेचुरल हेरिटेज इंक्लूडिंग लैंडस्केप, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड बायोडाइवर्सिटी साइट्स. जो नेचुरल हेरिटेज है वो क्या है? लैंडस्केप है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे हिमालय पर्वत है, कहीं पे बिल्कुल ही लैंडस्लाइड है ना. कल्चरल मॉन्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल द ताजमहल इंडिया में है, पिरामिड्स ऑफ गीजा इजिप्ट में है. वो कल्चरल मॉन्यूमेंट्स है ना, कि पुराने टाइम पे जो जिनका धार्मिक का कुछ होता था, कल्चरल है वो है. एंड आईफल टावर जो कि कहाँ पे, फ्रांस में. आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहाँ पर है? मोहनजोदारो इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान और सिंध के बॉर्डर के बीच पड़ता है ना, गुजरात के पीस में. पॉम्पे इन इटली. Artifacts, history, manuscript like the Dead Sea Scrolls or tools spotted in museums. Natural site, the Great Barrier Reef in Australia and Yellowstone National Park of the USA. Intangible heritage include practices, representations, expressions, knowledge, and skill
so that communities recognize as part of their cultural identities. It is non-physical and often transmitted orally or through practice. Characteristics: non-materialistic and dynamic, pass through generations, representation, tradition, ritual, and shared knowledge, domains of intangible heritage, oral tradition and expression, folk tales, legend, and poetry, performing art, dance, music, and theater. Okay, social practices, rituals, and festival, wedding, funerals, and religious ceremonies, knowledge and practices concerning nature, traditional medicine, farming methods. Craftsmanship, technique of pottery, weaving, or metalworking. Example: traditional festivals, Diwali in India, Carnival in Brazil. Performance art, flamenco in Spain, kabuki theatre in Japan. Oral traditions, the epic Mahabharata, India, and Homer's Odyssey, Greece. Craftsmanship, Persian carpet weaving, Japanese tea ceremonies. Knowledge system, Ayurvedic medicine, India, in indigenous farming practices. Comparison between tangible and intangible heritage. Interconnection between tangible and intangible heritage. Tangible and intangible heritage often coexist. For example, the Taj Mahal, tangible, is associated with the intangible tradition of Mughal architectural techniques. Traditional Japanese tea house, tangible, are linked to the practice of tea ceremonies, intangible. Both forms the heritage are crucial for preserving cultural identity and passing down traditions to future generations. ये साइमन सेकंड का आगे आपके पास आंसर करना है इसका 250 वर्ड्स पे, और राइट अ नोट और म्यूजियम के ऊपर आपको एक नोट लिखना है एज कल्चरल हेरिटेज. और जो कल्चरल हेरिटेज है, बड़े बड़े जो बनाए गए हैं हमारे कल्चर को लेके, उनको भी लेके आपको सुटेबल एग्जाम्पल लेके करना है, जैसे कि म्यूजियम और कल्चरल हेरिटेज. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड. म्यूजियम्स एज कल्चरल हेरिटेज. म्यूजियम सर्व एज रिस्पोजिटरीज ऑफ कल्चरल, historical, and artistic heritage, playing a crucial role in preserving the showcasing the legacy of humanity. They act as custodians of both tangible and intangible heritage, providing insight into past civilization, traditions, and innovations. Role of museums in cultural heritage: preservation of artifacts. Museums store and conserve historical artifacts, manuscripts, and artworks, preventing their deterioration. Example: the British Museum in London preserves the Rosetta Stone, a key artifact in understanding ancient Egyptian scripts. Education and research. They provide education opportunities by offering insight into different cultures, history, and traditions. Example: the Smithsonian Institution in the USA offers research facilities and exhibitions on various aspects of American history and culture. Promoting cultural awareness by showcasing diverse cultural elements. Museums encourage cross-cultural understanding. Example: the Louvre Museum in Paris displays art from ancient Egypt, Greece, and other civilizations, fostering global cultural appreciation. Safeguard intangible heritage. Museums also preserve intangible heritage by documenting traditional music, dance, rituals, and oral traditions. Example: the National Museum of Anthropology in Mexico exhibits cultural practices of indigenous communities. There are lots of types of museums. Types of museums are: art museum, focus on artistic expression. For example, the Prado Museum, Spain. History museum, displayed historical artifacts. The Anne Frank House, Netherlands. Science museum, exploring scientific advancement. The Science Museum, London. Conclusion: museums are not just space for preserving artifacts but also dynamic institutions that bridge the past and present. By safeguarding cultural heritage, they contribute to educate cultural identity and global understanding. अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, बी, वो पार्ट क्या है? डिस्कस द प्रिजर्वेशन स्टेप्स टेकन टू कंजर्व द ताजमहल एंड द केव्स इन भीमबेटका. आपको जो प्रिजर्वेशन स्टेप्स लिए हैं ताजमहल के और जो भीमबेटका की गुफा है उसके अंदर क्या क्या प्रिजर्वेशन है, वो सारे स्टेप्स आपको बताने. प्रिजर्वेशन ऑफ द ताजमहल एंड भीमबेटका केव्स. ताजमहल जो कि आगरा इंडिया में है. द ताजमहल इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इट इज सिंबल ऑफ इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज. प्रिजर्वेशन मेजर्स एम टू एड्रेस एनवायरमेंटल थ्रेट्स, पॉल्यूशन एंड स्ट्रक्चरल अगेन. स्टेप्स टेकन: एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एस्टेब्लिश ऑफ 10,400 स्क्वायर किलोमीटर ताज ट्रेपेजियम जोन में बनाए टू
reduce industrial emissions around the monument. Restriction on the usage of vehicle near the site. Electrical buses, rickshaws are promoted. Cleaning and restoration. Regular cleaning of the marble surface using multani मिट्टी fuller's earth to remove stains and restore its scene. आपको पता है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रखी है व्हीकल्स को वहाँ जाने पे? क्योंकि वहाँ पे अगर प्रदूषण हुआ तो प्रदूषण की वजह से वहाँ पे ब्लैक उनके साइड्स पे हो जाएगा, है ना. एंड जो वहाँ पर जो रिक्शा है वहाँ पे क्या जो सीएनजी चलाते हैं वही ज़्यादा अलाउ करी जाती है. फॉर एग्जांपल वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस तो धुआं नहीं निकालती और रिक्शा होती है वो भी सीएनजी होती है वो भी नहीं निकालती. लेकिन वहाँ क्लीनिंग भी रहता है. वो क्या करते हैं, सरफेस जो रहता है ना वाइट कलर का सरफेस जो मार्बल है उसे मुल्तानी मिट्टी से साफ करते हैं वो लोग डेली. स्ट्रक्चरल रिपेयर्स टू एड्रेस क्रैक्स एंड डैमेजेस कॉज बाय नेचुरल एगिंग. मॉनिटरिंग एंड monitoring and research. Installation of air quality monitoring stations to assess pollution levels. Collaboration with UNESCO and other organizations for advanced conservation techniques. Awareness in tourism management. Visitors caps and designated pathways to minimize wear and tear. Awareness campaigns to promote sustainable tourism. नंबर सेकंड पे आता है भीमबेटका केव्स. भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है, इंडिया में. द भीमबेटका रॉक शेल्टर ऑल्सो अनेक्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट शो केस prehistoric art and early human life. Conservation efforts focus on protecting ancient paintings and natural rock formations. आखिर ये जो भीमबेटका की गुफा है ना, ये बहुत पुरानी साइट है दुनिया वर्ल्ड की, और ये हमें ये दिखाती है कि पुराने टाइम में ह्यूमन अपनी लाइफ को कैसे व्यतीत करता था. वहाँ पे तुमने देखा होगा भीमबेटका की जो गुफाएं है ना, वहाँ पे ना बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं लिख रखी है उन लोगों ने, और वहाँ पे नेचुरल पत्थर अपने आप कैसे फॉर्म हुए थे ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी. स्टेप्स टेकन. साइट मैनेजमेंट. रिस्ट्रिक्शन ऑफ पब्लिक एक्सेस टू फ्रिगाइल areas. Installation of pathways and signage to prevent direct contact with the rock art. Environmental measures. Removal of encroaching vegetation to prevent damage of the caves. Preservation of the natural surroundings to maintain the site's integrity. Documentation and research. Detailed documentation of the rock art for study and digital preservation. Archaeological research to understand and protect the site's history. Local involvement and awareness. Engagement of local communities in preservation efforts. Educational programs to promote awareness of the site's cultural significance. Both sites demonstrate India's commitment to preserving its cultural and historical treasures to future generations. अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जो असाइनमेंट नंबर 3 है. सॉरी नहीं, असाइनमेंट नंबर 3 नहीं है, यही है, इसका सी पार्ट है. डिस्कस कॉमोडिफिकेशन इन टूरिज्म विद एन एग्जांपल डिस्कस इन यूनिट 5. जो आपके चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया है ना कॉमोडिफिकेशन टूरिज्म के ऊपर, वो आपको डिस्कस करना है. कॉमोडिफिकेशन in tourism involves transforming cultural elements into marketable products or experiences to satisfy tourist demands. This process can lead to simplification or alteration of cultural practices, potentially impacting their authenticity and ignorance. Example, Delhi Haat in Delhi. Delhi Haat is an open air market in Air Delhi, showcases ethnic handmade products from artisans across India. While it provides a platform for cultural exchange and economic opportunities for artisans, it also exemplifies the commodification of traditional crafts. Aspects of commodification in Delhi Haat. Adaptation to tourist preferences. Artisans may modify their products to cater to tourism tastes, sometimes compromising tradition methods and authenticity. Cultural programs, performance. The market setting encourages the presentation of cultural as a consumable experiences, while traditional crafts are displayed and sold in manner that appeals to tourists. Economic incentives. The potential for income from tourism can lead artisans to prioritize commercially visible products over traditional or culturally significant items. Implications. Positive outcomes. Provides artisans with income opportunities and helps in preservation and promotion of traditional crafts. Negative outcomes. Risks of diluting cultural authenticity and reducing rich traditions to make mere commodities for tourist consumptions. Understanding modifications in tourism is crucial for developing sustainable practices that respect and preserve cultural heritage while supporting local economics.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। आपको ये जो आंसर है ना, ये असाइनमेंट थर्ड का है इसी का, और इसका जो है वो 150 वर्ड्स में आपको आंसर्स देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टूरिज्म गेस्ट, फिर लोकल एनवायरमेंट्स, फिर वायरसेस, टूरिज्म साइट्स। ठीक है, पहला देखते हैं आर टूरिस्ट और गेस्ट। ठीक है, a tourist or guest refers to an individual who travels a destination outside an usual environment for leisure, recreation, business और cultural exploration। एक टूरिस्ट या फिर एक गेस्ट वो होता है जो एक इंडिविजुअल इंसान होता है जो कि ट्रैवल करता है बाहर एनवायरनमेंट में, लेज़र रिक्रिएशन करने के, जब उसका मन हो तब घूमने चला जाता है, बिजनेस के लिए आता है या कल्चरल एक्सप्लोरेशन के लिए आता है। टूरिस्ट आर टेम्परेरी विजिटर्स हु एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग साइट सीइंग, शॉपिंग एंड एक्सपीरियंसिंग लोकल कल्चर्स। वो एक तरीके के विजिटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं इंक्लूडिंग साइट सीइंग, अलग अलग जगहों पे देखते हैं, और शॉपिंग भी करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं लोकल जगह का, लोकल कल्चर का। गेस्ट आर ऑफन परसीव एज आउटसाइडर्स एंड रिले ऑफ होस्ट कम्युनिटी फॉर सर्विसेज सच एज अकोमोडेशन, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन। The interaction between tourist and host plays a crucial role in shaping cultural exchange, economic benefits, and mutual understanding. However, tourism can sometimes lead to cultural commodification and environmental degradation if not managed sustainably. Local environment viruses, tourist sites. Tourist sites are dynamic interaction between the local environment and tourist sites. While the natural and cultural appeals of a site attracts tourists, the influx of visitors can strain local resources and disrupt ecological balance. Tourist-centric development are often prioritized infrastructure like hotels and transform which can lead to deforestation, pollution, and habitat destruction. Conversely, preserving the local environment enhances the attractiveness and sustainability of tourist sites. Balancing conservation and tourism development require carefully planning, community involvement, and environmental regulations. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो, Ecotourism is responsible travel approach that focuses on conserving natural environment, respecting local cultures, and minimizing environmental impacts. It promotes sustainable practices by emphasizing education, community involvement, and conservation. Activities like wildlife observation, hiking, and visiting protected areas are common in ecotourism. For example, safaris in American National Park or trekking in the Himalayas promote environmental awareness. Why? Supporting local economies, ecotourism aims to foster an appreciation of nature and cultural heritage while ensuring long-term environmental sustainability. Number D is just sustainable tourism. Sustainable tourism refers to tourism practices that meet the needs of current tourism and host region while protecting the environment and ensuring benefits for future generations. It emphasizing minimizing the environmental impact, promoting cultural heritage, and ensuring socio-economic equity. Strategies include using eco-friendly infrastructure, reducing waste, supporting local businesses, and involving communities in decision making. Examples include ecologists, heritage tourism, and low impact adventure activities. Sustainable tourism ensures that the tourism development contributes positively to the economic, environment, and society without depleting resources. नंबर ई जो है द फील्ड साइट या फिर टूरिज्म स्पॉट। अ फील्ड साइट और टूरिज्म स्पॉट इज अ स्पेसिफिक लोकल दैट अट्रैक्ट विजिटर्स ड्यू टू नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और रिक्रिएशनल पोटेंशियल। एग्जाम्पल्स इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, नेशनल पार्क्स, बीचेस एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। फील्ड साइट्स सर्व एज लोकल focal points or research in tourism studies exploring visitors behavior, host guest interaction, and site management. Effective tourism management at these spots involving balancing tourism experiences with the preservation of local heritage and the environment. Example include the Taj Mahal in India and Machu Picchu in Peru. And then आता है हमारा native host. A native host refers to individual or communities residing in a tourist destination. These plays a significant role in shaping the tourism experience by offering services, sharing cultural, and interacting with visitors. Host and custodians of local traditions, cuisine, and heritage which are central to a tourist experiences. However, the influx in tourism can impact their lifestyle, create cultural commodification, and lead to economic dependency. Respecting hosts and involving them in tourism development ensures equitable benefits and fosters cultural exchange.
तो हमारा असाइनमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। और एक और बात और, इफ़ यू नीड इग्नू असाइनमेंट कॉन्टैक्ट विद दैट नंबर, हमारे इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्कैन PDF चाहिए तो वो 30 रुपीज़ पर PDF है, और अगर हैंड रिटन हार्ड कॉपी असाइनमेंट चाहिए तो आपको 300 रुपीज़ पर असाइनमेंट होंगे। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए इग्नू के तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन अगेन।